Welcome back, guys, to Dear Unconventionals. Today's guest is someone whose work has transformed education, healthcare, and the rural development across India. He has been an IS officer, held prestigious positions like being advisor to the PM, and now is a member of the Public Enterprises Selection Board. Let's meet Mr. Amarjeet Sinha, a man whose life has been dedicated to public services in the most unconventional ways. So, welcome to the show. Thank you for doing this with us. So, sir, you have topped the Delhi University and you've also received the Rhodes Scholarship. I want to know why you dedicated your life to public services instead of choosing any other career path. See, each one of us have choices in life, and many a time it's a matter of what you are driven by. If there are some values which have been very dear to you, and you foresee an opportunity to do something which makes you contribute in whatever way possible to that process, you leave everything aside and focus on it. In my case, very clearly, very early in life, I did have this very strong urge to do something which improves lives and livelihoods, to do something which improves human well-being. And I think some of the smaller lessons that you learn in life the hard way, they remain with you. And if I could give just one example, I still recall after my 10th board exams, I worked as a salesman in a bookshop for 6 months. Oh. And that taught me many lessons. One of the things it taught me was, of course, the importance of human development, but more importantly, how any form of an inclusive India that they dream of is not conceivable unless and until human development, social progress keeps pace with economic growth. Right. And I think that's the reason why, perhaps leaving aside all other options, I preferred to work in this sector. Amazing, right. So your career has spanned over 40 years and you've played an integral part in designing and implementing the Sarva Shiksha Abhiyan and the National Rural Health Mission. Please tell us what drove you to dedicate your life for this and what impact it has created. See, it just happened that after serving in Bihar, which is my home state, for about 12 years, we decided that we will now move to the Mussoorie Academy. And at the Lal Bahadur Shastri Academy, one advantage which I had was that I had a very liberal director in Dr. N.C. Saxena, who allowed us to travel across the country to see where projects have worked well, where they have not worked well, to visit some NGOs, to learn from them, to understand how they work. So a lot of that exposure across the country, plus the learning which had already come in my 12 years in my home state, especially in districts like the Naxalite affected Jahanabad or in the tribal district of Singhbhum, a lot of lessons in terms of reaching the last mile. And perhaps all these together prompted me to at least address the supply side. And as far as universal elementary education is concerned, of course, we were very fortunate because that's also the time when the Supreme Court passed orders in the Unni Krishnan judgment, making education up to the age of 14 years a fundamental right. And as a follow-up to that, a lot of the work that was being done, the Sarva Shiksha Abhiyan was a follow-up to that. Likewise, in the case of the National Rural Health Mission, when the new government had come to power, they decided at that time, in 2005, that rural health will be a priority for them. And simply because I had worked in education, I was also part of the team that was invited to develop the concept, the mission, and its implementation. So in some ways, opportunities came to me at the right time. And two, since my heart was there, it was very easy to give one's best to these kinds of tasks.
So for our viewers, please elaborate the impact that the Sarva Shiksha Abhiyan has had across the country today, and what has been your role in making it reach those grassroots levels. See, a lot good policy making needs very thorough research inputs as well. आप पॉलिसी तभी अच्छी बना पाएंगे अगर आपने सभी समस्याओं को पहले समझा है और उसके समाधान को ढूंढा है. So luckily for me, during that period, just before we worked on the Sarva Shiksha Abhiyan, I was part of a research team on public report on basic education, where 8 of us, including Professor Jean Drez, Dr. A.K. Shiv Kumar, Anuradha Dey and others, we had all come together to do a public report on basic education, where we had looked at states like Bihar, UP, Madhya Pradesh and Rajasthan, where children were still not in schools in 1996. And we had also looked at Himachal, which had a very silent school revolution already by then. So that particular study provided me an opportunity to understand the sector as an outsider and a researcher. Sarva Shiksha Abhiyan did not visualize everything at the macro level, right down to the last point. Number of teachers, number of classrooms, toilets, drinking water, scholarships, uniforms, textbooks. Lot of these requirements were all worked out, teacher development support, right up to the last person from the field level. The other thing which was very central to the idea, though it was a central initiative in partnership with states, one, there was a lot of consultation with the states in moving forward. Every district level team had been oriented for planning for Sarva Shiksha Abhiyan or for the National Rural Health Mission. And more importantly, an effort was made to institutionalize decentralized community action. Right. For example, in Sarva Shiksha Abhiyan, all school buildings were made through a joint partnership of the headmaster of the school and the local community. Okay. It wasn't that, so all interventions were so designed that the local communities had a role in them, had a stake in them, and they were all contributing towards making that program better. There was also a lot of flexible financing in these programs at the school level, because if a teacher is finding it difficult to explain a concept and he needs some teaching aids, it had provided for some teacher grants and school grants, which help the teacher to keep the school clean and also helps the teacher in ensuring some teaching aids as required by local teaching needs. So I think decentralization as a principle, flexible financing as a principle, innovations in human resource engagement as a principle, these were very central to the approach, which came out as a consequence of the research experience and exposure that we had in the course of working on the probe report. See, if I go only by numbers, and numbers which are a validation of what has happened, if you look at the 42nd round national sample survey, which was carried out in 1986-87, it's quite shocking, but 69.23%, 6+ females in India had never been enrolled in a primary school in rural India. 69.23%, 6+ females, which means all ages above 6. It's a huge number. 71st round national sample survey carried out in 2014-15, after the Sarva Shiksha Abhiyan had done about more than a decade of implementation. Boys or girls, urban or rural, up to elementary education, which is class 8, attendance rates were identical for both of them, which means that almost all children had come to the schools by then. Yes, one limitation which the Sarva Shiksha Abhiyan had, and perhaps which shows now, is that the thrust for improving quality of learning outcomes continues to remain a challenge. While children from very vulnerable social groups, girls from all communities,
They have all voted with their feet for quality education and come to the schools. But perhaps in ensuring them good quality learning outcomes, we need to do much more in the years to come. So on the opportunity side, there is a massive step forward. On the participation side, there's a massive step forward. Sure. But जहाँ तक learning का प्रश्न है, अभी बहुत काम उसमें करना बाकी है. Efforts are on. I am sure over the years, better results will show. Sure, sir. Of course, we are all hopeful. और आपने mention किया that जब आप LBSNA में थे and so you had to travel extensively to see the problems, and today you've traveled to over 95% of the Indian districts, which is a massive number. So what were some of those grassroots levels the issues that you must have seen while you were doing these traveling, जब ये सब आया ही नहीं था, तो उस टाइम जब आप ट्रैवल करते थे तो what did you think कि ग्रास रूट लेवल पे क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हुआ करती थी या आज भी एक तो ना, जब आप हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुवाहाटी से गुजरात आप ट्रैवल करते रहिए, अगर एक चीज विच स्ट्राइक्स यू इज हाउ मच होप डेमोक्रेसी जनरेट्स. देयर इज एस्पिरेशन इन एवरी हाउस होल्ड. पूरे हिंदुस्तान के भ्रमण में मुझे एक बच्चा नहीं मिला, एक अभिभावक नहीं मिला, पेरेंट नहीं मिला जो ये बोले कि हम पढ़ना नहीं चाहते या हम बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते. तो ये जो एक भावना हमारे बीच में थी कि गरीब घर का बच्चा है, नहीं पढ़ना चाहेगा, इससे ज्यादा बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता. एंड आई थिंक द मोर एस्पिरेशंस देयर आर, द मोर प्रेशर ऑन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स टू फुलफिल दोज एस्पिरेशंस. तो इन अ वे दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, जहां हर परिवार, हर व्यक्ति एक उम्मीद के साथ जीता है और एक अवसर को तलाशता है आगे बढ़ने के लिए. So clearly, whenever you travel, you feel that if you are able to improve the quality of programs or interventions, how much it can contribute to a better participation by vulnerable social groups, by girls, by women, and so on, in order that we actually move towards the constitutional visualization of an equal India, or of an India that is inclusive, an India which respects rights. So I think in many ways I could connect the micro with the macro. Whatever we had said in the preamble to our constitution, this thought used to come to my mind कि इस गांव में हम उस संदर्भ में कहाँ पहुँचे हैं, क्या कमी है, कुछ किया जा सकता है या नहीं. So that is the context in which I used to situate my field visits. राइट. तो मतलब जब भी आपने पॉलिसीज बनाई या उनके पीछे आपने इतना एफर्ट डाला, क्या पर्सनली जाके मॉनिटर करते थे कि वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं? लाइक हाउ डिड यू इंश्योर दैट डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअली टुक प्लेस एंड मेड अ डिफरेंस? बिकॉज कई ऑफिसर्स होते हैं जो काम कर लेंगे उस चीज़ का, मोस्ट लाइकली सर क्रेडिट भी ले लेंगे कि हाँ ये हो रहा है, बट मे बी देयर इज नथिंग टू बैक इट अप. सो वर यू ट्रैवलिंग दैट मच टू ऑल्सो सी कि ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं? इन एनी गवर्नमेंट प्रोग्राम अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, एन अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क. Now that accountability framework comes through many means. आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है. टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स कैन बी अ ग्रेट एड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग. बट इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द रोल ऑफ द कम्युनिटी एंड इट्स एसोसिएशन विद पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, हेल्थ सेंटर हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, वो कैसा उसकी व्यवस्था होगी, कैसा उसके अनुभव होंगे, कैसा उसकी अचीवमेंट्स होगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि कहाँ तक इट इज सीन एज अ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन. सरल हिंदी में हम बोलते हैं कि हमें सरकारी संस्थाओं को असरकारी बनाना है. असरकारी मतलब इम्पैक्टफुल बनाना है. इम्पैक्टफुल तभी होता है जब कम्युनिटी के भागीदारी की व्यवस्था होती है, क्योंकि बिना लोक भागीदारी के इन सेक्टर्स में सफलता नहीं मिल सकती. तो कहीं ना कहीं हमें द लोकल कम्युनिटी एज एन एक्टिव पार्टनर इन ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम वो हासिल कर लेते हैं तो वैसे कार्यक्रम जो लोगों के मानस तक पहुंचता है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है, वो फेल नहीं होता है, वो आगे बढ़ता है. चुनौतियां रहेंगी, लेकिन सफलता तभी मिलती है अगर वहाँ सही कड़ी एक भागीदारी की बने, एक पहचान बने कि यह कार्यक्रम गरीबों का है. जरूर.
जी। एंड हमने एजुकेशन की बात कर ली, वेयर you've made a huge impact. Employment, you have played a huge role in ensuring कि village में there's been employment. सबसे ज़्यादा बात जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता है is that you've played a huge role in starting the women self-help group. Can you please share some light on what that's all about so that our viewers gain some insights into it? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में प्रारंभ हुआ। 2011 के पहले कई राज्यों में, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में लाइवलीहुड मिशन का काम प्रारंभ हुआ था। अलग अलग नाम से जाना जाता था। कुडुम्श्री का मूवमेंट था केरल में, अन्य राज्यों में वेलुगु प्रोजेक्ट था आंध्रा और तेलंगाना में, जीविका के नाम से जाना जाता था बिहार में। 2011 में हुआ कि इसी व्यवस्था को, महिलाओं के संगठन खड़ा करना, एक सामाजिक पूंजी तैयार करना, सोशल कैपिटल, हमें हर एक राज्य में कोशिश करना है। 2011 में हम लोग जब प्रारंभ किए और जब इसका फैलाव बढ़ता गया, 2014 में हम करीब 2.5 करोड़ महिलाएं हमारे इस मूवमेंट में आई थी। 2014 से निरंतर प्रयास करके आज हम 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, और ये महिलाओं का जो समूह है, करीब 1 करोड़ समूह, महिलाओं तक क्रेडिट पहुंचाने में, महिलाओं के बीच शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य की चर्चा कराने में, महिला सशक्तिकरण में, एक सामाजिक भूमिका तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हम ये देखते हैं जो पंचायत की निर्वाचन की व्यवस्था है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत जो होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है अगर वहाँ सशक्त कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह। कई गांव में, बिहार में आप जाइए, अगर कोई व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, मान लीजिए राशन दुकान में राशन नहीं आ रहा, गांव की महिलाएं आपको बोलेंगी कि जीविका को दे दीजिए, ठीक हो जाएगा, महिलाओं के संगठन को दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो एक प्रकार से काउंटरवेलिंग प्रेजेंस है एक विमेन्स कलेक्टिव्स का, जो इलेक्टेड पंचायत लीडर्स को अकाउंटेबल भी ठहराती हैं। और ये प्रयास होता है कि दोनों जहां मिलके काम करते हैं, PRI और SHG, जैसे कुडुम्श्री में केरला में आप देखेंगे, पंचायतों के साथ बहुत नजदीक से मिलकर के काम करते हैं वो, तो परिणाम और बेहतर आता है। जो हमारे जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, सबसे कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी उन्हीं राज्यों में है जहां विकेंद्रीकरण ज़्यादा हुआ है, जहां डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हुआ है। केरल, तमिलनाडु, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में। तो निश्चित रूप से जहां डिसेंट्रलाइजेशन है वहां ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहीं पे अगर ह्यूमन डेवलपमेंट है तो वहीं पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी कम है। तो ये एक लेसन कि जब हम अगर पॉवर्टी के विषय पे काम करें तो महिलाओं का संगठन, क्योंकि उसके माध्यम से क्या होता है, कई चीजें साथ होती हैं। जब एडोलेसेंट गर्ल्स पार्टिसिपेट इन हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, the fertility rates come down. When primary health system is strengthened for maternal child health, women have the confidence to leave their homes and go to a vocational institute, an ITI, a polytechnic or a college. Their children are looked after at home. It makes a difference. Their participation goes up. When women, adolescent girls together go to schools and colleges, it creates a new identity for them. Nobody's daughter, nobody's wife, nobody's sister, but a woman unto her own. Yes. और तभी परिवर्तन होता है, तब उनकी सोच बदलती है। और खास करके लाइवलीहुड मिशन में जो सबसे पोटेंट फोर्स रहा, पूरे देश में हमारे यहाँ करीब 5 लाख से ज़्यादा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, साधन व्यक्ति। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ये जो महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो खुद गरीब थी, आज गरीबी से बाहर आई हैं। तो दे बिकम लाइक रोल मॉडल्स। मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, जिस किसी राज्य, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, जिस किसी राज्य में हमें जब संगठित करना होता था महिलाओं को, हमारी दीदियां जाती थी और 6-6 महीने रहती थी वहाँ बच्चों को छोड़ करके। क्या तो वहाँ समूह बनाना है।
So the real movers, and if I were to give credit to anyone, it is these women and their persistent efforts. There is no better example of national unity than the role that these women have played in going from one state to the other to promote women's collectives on a large scale. ये पूरा entire movement जो है, और जो अभी मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 2011-12 की तुलना में 11% की जो वृद्धि है, और जो यूएनडीपी ने भी इस बात को रखा था 2023 में कि इंडिया में बिटवीन 2005-6 एंड 2019-21 415 मिलियन, मतलब 41.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए. यह संभव इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ दीज फैक्टर्स दैट आई आउटलाइन. बट हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑल्सो से कि अभी हम क्रॉनिक पॉवर्टी जो होता है, अति गरीबी जिसे बोलते हैं कि कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, वो परिस्थितियां अब हिंदुस्तान में लगभग समाप्त हो गई हैं. लेकिन क्रॉनिक पॉवर्टी से लोग बाहर आ गए हैं, लेकिन लाइफ ऑफ डिग्निटी में अभी भी समय है, क्योंकि जो अर्निंग उनकी है वो इतनी नहीं है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छी व्यवस्थाएं उनके लिए हो, एंटरटेनमेंट के लिए भी खर्च कर सकें. एसेंशियल स्पेंडिंग में ही उनकी पूरी जीवन निकल जाती है. और ये प्रो पुअर पब्लिक वेलफेयर की जो फोकस रही, इसका एक परिणाम ये पिछले 10 सालों का कि निश्चित रूप से गैस कनेक्शन, शौचालय, पक्के घर, बिजली कनेक्शन, सब में काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुआ. और ये सभी कार्यक्रम उसी डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी एक्शन, पंचायत और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ होना, साथ काम करना पर आश्रित है. सर, आपने डिग्निटी ऑफ लेबर की भी बात करी. आपके माइंडसेट से, आपके हिसाब से वो क्या चीज़ है जो होनी ज़रूरी है कि दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो फुलफिल्ड? देखिए, जो डिग्निटी की बात हमने कही वो कहीं ना कहीं वेजेस से लिंक्ड है. किसी भी समाज में कहीं भी जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो प्रॉस्पेरिटी आती है. प्रॉस्पेरिटी अगर सबके लिए आनी है तो सोशल डेवलपमेंट पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है. और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सस्टेनेबल बनाने में सोशल डेवलपमेंट की भूमिका है. हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार 2091 के बाद से, 1991 के बाद से खास करके काफ़ी तेज़ रही है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से ही औसत करीब 6.5-7% पर ईयर हम ग्रो कर रहे हैं. उसका परिणाम है कि गरीबी में कमी आ रही है. लेकिन हमें अगर डिग्निटी भी देना है तो जैसे अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में 2019-20 का अगर आप देखें तो ये एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर 25,000 रुपये महीने आप अर्न करते हैं तब आप देश के टॉप 10% वेज अर्निंग लोगों में, इनकम अर्निंग लोगों में. 25,000 तो ज़्यादा अमाउंट नहीं है. इसका मतलब है कि अधिकांश लोग जो काम करते हैं 14,000, 15,000, 18,000, 19,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं. आज के ज़माने में और ख़ास करके शहरों में 18-20 हज़ार की कमाई एक लाइफ ऑफ डिग्निटी सुनिश्चित नहीं कर पाती है. जितनी भी सुविधाएं सरकार दे, फिर भी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, बच्चों की शिक्षा का खर्च है, गैस का खर्च है, बिजली का खर्च है, ऐसी कई खर्च हैं. जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करते हैं, तो गरीब से गरीब घर के भी खर्च बढ़ते हैं. इसको देखते हुए, और ये इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है कि वेजेस तेजी से तभी बढ़ते हैं जब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है. प्रोडक्टिविटी तब बढ़ेगा अगर हेल्थ और एजुकेशन इम्प्रूव करता है पॉपुलेशन का, स्किल्स की व्यवस्था बढ़ती है. इफ वी मूव अप द स्किलिंग लैडर, इट विल लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी. इफ वी आर एबल टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी, विल बी एबल टू पे हायर वेजेस. एक बहुत बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान के लिए. हाउ डू वी कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली मूव अपवर्ड ऑन द स्किलिंग लैडर to gain higher productivity and thereby higher wages of dignity. क्योंकि जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ता है तब तक हमारी इनकम्स को भी बढ़ाने में कई चुनौतियां आती हैं. जरूर. और हमारे यहाँ खास करके जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. वी हैव द यूथ बल्ज. अभी हमारे यहाँ लोग बूढ़े नहीं हुए, काम करने के लोग बहुत हैं,
लेकिन हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि जब ज़्यादा लोग काम करने हैं के वाले होते हैं, और ख़ास करके अगर अनस्किल्ड वेज लेबर है, तब ये दिक्कत होती है कि वेजेस का नीचे होना एक परिस्थिति बन जाती है, बिकॉज दे आर मोर पीपल विलिंग टू डू वर्क देन द जॉब्स विच आर अवेलेबल. एज अ कॉन्सिक्वेंट द मार्केट्स वर्क्स एडवर्सली. तो एक प्रकार से ये डेवलपमेंट में कैसे हम उसको इंक्लूसिव करें, कैसे हम उसको प्रोडक्टिव भी रखें, ग्रोथ ओरिएंटेड भी रखें, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस गो हैंड इन हैंड. क्योंकि जैसा हमने कहा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट साइमल्टेनियसली फोकसिंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. राइट, ओके. एंड सर, आपने जितनी भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करवाई हैं, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, हेल्थ मिशन हो गया, इवन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एक जनरल परसेप्शन है ऑफ अक्रॉस द नेशन कि जो थोड़ी जूनियर पोजीशन से आएंगे उनको चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है. आपके लिए ये फेज या ये पावर कब आप इम्प्लीमेंट कर पाए या यूज़ कर पाए? बिकॉज यू शुड फील एम्पावर्ड ऑल्सो टू मेक श्योर कि ये इम्प्लीमेंट भी हो रहा है. तो आपके पास इतना आसानी से तो नहीं हुआ होगा, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे. क्या चैलेंजेस थे वो जिनसे आपको इवन सीनियर लेवल पे थोड़ा शायद इफ आई मे से सो थोड़ा झगड़ा करना पड़ा होगा कि आप कहीं से रूट कॉज कुछ देख कर आ रहे हैं टू मेक समबडी एल्स रियलाइज कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. सो आपके लिए वो क्या चैलेंजेस थे एंड आप कब से उतना एम्पावर्ड फील करने लगे टू मेक श्योर दैट दीज थिंग्स गेट इम्प्लीमेंटेड? देखिए, किसी भी समाज में अगर अपनी बात को आप चाहते हैं कि लोग माने, वो केवल आइडियोलॉजी के बेसिस पे कोई नहीं मानेगा. अगर आपके पास एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा, और साक्ष्य के आधार पर आप बात रखेंगे, तो आपके कोई ओपोनेंट भी अगर होंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, इसने अपना होमवर्क किया है. आप अगर होमवर्क अपना थॉरली करें, तो इस तरह से जब एविडेंस लेकर के आप बहस करते हैं, तब मैंने पाया है कि रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाता है of whosoever is called upon to take a decision. The other challenge is that, but हमारे यहाँ क्या है कि एक कल्चर है for a long time that at every level we don't want to give away our authority to local institutions. So I think we need to bear this in mind, and that's why in implementing any program, getting everybody on board towards higher levels of devolution and decentralized community action is itself a challenge. The program, for example, I was part of the team that has designed the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, the housing program. We went by the evidence at every stage. We had the top architects, professors think through the designs, travel to the different parts of the country. They gave us local material, its use, costings, and so on. The program was designed on that basis. Technology was used in transfer of funds and so on, 100% to the bank accounts. Geotagging was done of our stage-wise construction. So we find and local communities knew what was happening. So more public information that there is, more the likelihood of a program doing better. हम जितना अपने को सब्जेक्ट करेंगे रियल टाइम पब्लिक रिपोर्टिंग, ये नहीं कि हम केवल उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें. एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन सी. जब पब्लिक डोमेन में होता है तो मान लीजिए अगर कहीं कोई लार्ज स्केल गलती हो रही है तो इमीडिएटली डिटेक्ट होगा और कहीं ना कहीं प्रेस में, मीडिया में आएगी वो बात जरूर. तो द मोर यू सब्जेक्ट योरसेल्फ टू पब्लिक स्क्रूटिनी, द मोर यू आर प्रोटेक्टिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम एनी रॉन्ग डूइंग. So I think it's the other way around. The more you subject yourself scrutiny, the more you will find that your program will do better. And this is where you need to continuously work with your teams. छुपाने की क्या जरूरत है? जितना पब्लिक करो उतना साफ होगा कार्यक्रम. जरूर, लोगों को मालूम तो पड़ेगा. आपका आंसर एक्चुअली डिबंक भी करता है एक मिथ कि सरकार को कोई चिंता ही नहीं है. आई थिंक अगर राइट प्रोसेस है तो everything is doable. Speaking of, आपके कई credentials रहे हैं जिसमें से एक है that despite doing all of this and keeping busy, you've managed to author one book which is called The Last Mile: Turning Public Policy Upside Down. इस टाइटल का क्या significance है और upside down का मतलब? Actually, this was my 8th book. Oh. But this one in particular is very dear to me
because what I have looked at is what I have been talking to you about, the last mile challenges. कई बार ये सुनने को मिलता है कि नीति तो बड़ी अच्छी बनाते हैं हम हिंदुस्तान में, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं करते. हमारा ये मानना है कि ऐसी नीति जो सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, नीति बनाने में ही कमजोरी रह गई. और ये कमजोरी क्या होता है कि टू आइडेंटिफाई द लास्ट माइल चैलेंजेस and address them in the policy itself. The last mile is about, turning upside down. We are talking about upside down because क्या होता है कई बार if a policy is prepared without even realizing what the challenges of the last mile are, it will not succeed. So the lesson is that there must be a very intensive policy design phase or a program design phase, where you think through all the challenges, where you ensure that all challenges are addressed effectively, where you ensure that you have learned from all the errors of the past, the mistakes of the past, and set right or brought in a system of professionals which help you to implement it. I think, I tried my level best to write a very honest book, in the sense कि किस तरह के challenges आते हैं और क्या समाधान हो सकता है. कई एरियाज में जहां अभी भी हमें सफलता नहीं मिल पाई है. इट इज नॉट ओनली अबाउट सक्सेसेस, द बुक इज अबाउट फेलियर्स एज वेल. Many sectors where we have not been able to do as well as we wanted to do. So what it does is it trains your mind to think through the challenges of development from the perspective of common people. Right. Wonderful, sir. And हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है. The next thing, एक तो आपके बहुत सारे credentials हैं, which is absolutely commendable कि इतने स्पैन में आपने इतनी सारी चीज़ें करी हैं, जिसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी रहा है. LBSNA एकेडमी मसूरी में आप जाके IAS ट्रेनीज एंड ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं. जब वो हायर पोजीशंस अचीव करते हैं, लाइक बीइंग इवन सेक्रेटरीज एक्सेट्रा, क्या फीलिंग देता है वो आपको? व्हाट डज इट मेक यू फील? No, it makes you feel very happy at times, and I still remember the classes in Mussoorie, because Mussoorie की एकेडमी में सोशल सेक्टर की पढ़ाई इतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता था. पहले वहाँ पे क्या था कि रेगुलेटरी फंक्शन, इलेक्शंस कंडक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, इस पर तो फोकस था काफ़ी, बट अ लॉट ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर needed more focus. So I remember 1992 batch onwards, I started running a social sector module, which I am continuing to do even now. And during the course of that, where I was sharing successful practices in government, NGOs and others, the challenges of many of these sectors, education, health, nutrition and so on, what may help us to do things better, studies on poverty and related subjects. तो मुझे अभी भी याद है, मैं उनसे यही कहता था कि देखिए, आप एक ऐसी नौकरी में आए हैं जहां पहले दिन से आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं. आपको लीडरशिप पोजीशन दिया जाता है, SDM बना के, CEO जिला परिषद बना के, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना के. अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे तो पहले जितने बच्चे इम्यूनाइज होते थे उससे ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं. पहले जितने बच्चे स्कूल आते थे उससे ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं. पहले जितने बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में जाते थे उससे ज़्यादा और बेहतर सुविधाएं उन्हें मिल सकती. एंड माई लास्ट पार्टिंग वर्ड टू देम यूज्ड टू बी, down the line 10 years from now, if I visit where you are posted and I find that you've not focused on these sectors, I will refuse to recognize you. मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा अगर इन कार्यक्रमों में तुम काम न करो. And I must say that many of them have lived up to the expectations. They have tried very hard. It is difficult because there are challenges of being a hierarchical society. There are challenges of incomes not rising as much as is needed for a better quality of life. There are challenges. We have been able to attain high rates of economic progress, but for us to reach where we want to, we need even higher rates of progress and even more shared inclusive growth, which can only come through more attention to social development. And Mussoorie Academy, last 30 years that I have been going there regularly to teach, it generates hope that maybe the next generation of civil servants will pay even more attention
to improve the performance of many of these public institutions. And even marginal improvements in these sectors, इस सेक्टर में धैर्य की जरूरत है. परिवर्तन सब कुछ सामने नहीं दिखता है. इट इज नॉट समथिंग लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ प्रधानमंत्री आवास योजना. आज शुरू किया, 3 महीने में बन गया, रेडी हो गया, घर देख लिया आपने. ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इट टेक्स टाइम. एंड बिकॉज ऑफ विच कई बार क्या होता है कि इन द पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन ऑल्सो दे डोंट गेट दैट प्रायोरिटी. सो अगर हमें इसको प्रायोरिटी में लाना है, ये एक बड़ा चैलेंज है. कैसे हम एविडेंस बेस्ड तरीके से इस बात को हर घर तक पहुंचा सकें, हर पॉलिटिकल लीडर सब तक पहुंचा सकें कि अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो देश वहां कभी नहीं पहुंचेगा जहां आप पहुंचाना चाहते हो. ये बहुत बड़ा संवाद एक है. दिस इज अ पॉइंट दैट आई हैव बीन ट्राइंग टू ड्राइव होम कंटिन्यूअसली. राइट. एंड सर, आप 30 साल से ट्रेन कर रहे हैं. व्हाट वाज दैट मोमेंट इन योर लाइफ जब आपके पास ट्रेन करने के लिए ऑफर आया होगा, वेयर यू रियलाइज्ड कि यस, थ्रू दिस मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ या एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ ओवर द यंग माइंड्स? देखिए, it just happened, many things, fall in place. I consider myself a very fortunate civil servant कि जिन कार्यों में पैशन है उसी क्षेत्रों में पोस्टिंग हो. एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट एंड मसूरी की ट्रेनिंग छोड़ के मैंने और कोई नौकरी देखा ही नहीं है. सिविल सर्वेंट्स को तो बहुत तरह की जॉब्स मिलते हैं, लेकिन आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एंड हैप्पी दैट आई वर्कड इन दीज सेक्टर्स, बोथ इन माय स्टेट एंड हियर. नाउ ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, बिकॉज मेनी अदर्स वुड प्रेफर टू बी इन कॉमर्स, ट्रेड एंड अदर सेक्टर्स. बाय चॉइस आई केम हियर एंड इट गेव मी हैप्पीनेस बिकॉज इट गेव मी अ प्लेटफॉर्म. एंड सरकार जितना बड़ा कैनवस देती है, कोई प्राइवेट सेक्टर में, एनजीओ में कहीं ये पद नहीं मिलता है. The canvas on which the government works is huge. When you are designing national level programs, imagine the power of the canvas. You are able to touch lives all over the country. जब 3 करोड़ घर लगता है, 30 million homes, designed in a program where I have participated, or the expansion of the school system under Sarva Shiksha Abhiyan, or of some primary healthcare services improving at the cutting edge level, it definitely gives you a lot of satisfaction. Sure. But you really have to hold on. धैर्य की आवश्यकता है. परिवर्तन तो होगा अगर बेसिक प्रिंसिपल सही रहे. Decentralized community action, untied financing, adequate financial resources, norm-based work and so on. जो लोग आज की डेट में ऑफिसर्स आते हैं फॉर ट्रेनिंग, 30 साल में क्या द काइंड ऑफ ऑफिसर्स जो आए हैं उनमें आपने कोई फर्क देखा है? देखिए, in every generation of officers, because एक तो बात तय है कि this is civil service में जो एंट्री की व्यवस्था है, पब्लिक सर्विस कमीशन and so on, it is a fairly rigorous process. Even the topmost critique of civil service will say that the selection process has stood the test of time. It has been by and large recruiting people who've done well academically. Yes, like in the rest of society, even in the civil service, over the years, some people lose their integrity or their ability to perform quality services. Many other challenges also come in. They choose to compromise where taking a stand was the better option. Many of them become compliance masters. All these problems are there. But having said that, there is always a very large number in very remote locations as young officers who try to make a difference to the lives of people. And according to me, even today that number is large. The new generation has more knowledge and better skills. The challenge is the attitude. In a few instances, we do find that very early in life, on the attitude bit, it's difficult to train somebody beyond an age. And often it does come in the way. But having said that, you can't have a perfect civil society because the imperfections of society show up in civil services as well. But the canvas that it offers is huge. And my advice to every youngster wanting to join the civil service is to tell him that, look, you've not made a mistake.
but be clear on what you want in life. If you want to make transformations in the society that you live in, here is your opportunity, whichever sector you work in. And I see my role as encouraging them to more of what is good, to have an analytical mind, to go by the evidence, and most importantly, to be happy doing things which transform lives and livelihoods of people. So without taking names, आप definitely उन officers से मिले हैं जिनको आपने recognize नहीं किया है फिर ऐसा हुआ होगा. No, you feel a little you Disappointed lament or- at times. yeah. कि क्यों, why did this man is such a bright guy? Why did he have to move to this line? But a large number of them have done us a lot of proud also. Of course, They yeah. have done so well that you are so happy that ये interest लेके काम किया, बहुत अच्छा किया. तो as somebody associated in their development as a trainer, it gives you a lot of happiness. कि at least some values you were able to drill in those children, those youngsters and officer trainees when they came there. Right. इनको ट्रेन करने में while you train them, क्या आप इनसे भी कुछ सीखते हैं? बहुत. In fact, almost every day I keep lecturing at different places. कभी Buddha fellow, कभी Gandhi fellow, कभी, and there is so much to learn from each of them. Anyone who has spent time in the field is a treasure of knowledge because they have observed many things at the field level. And I think the challenge for all of us is to become better listeners, to understand the ground reality from what is being articulated by those who've tried to bring change in the field. Where they failed, where they succeeded, government say, civil society say, NGOs say, all of them have a role. Free media say. That's why criticism should never be taken as a hostile thing, you know. Criticism is necessary for democratic politics. Right. And with that, sir, now you are a part of the Public Enterprises Selection Board. I'd like to ask you, what are those top qualities or skill sets that you look for while the selection process is going on for those people who interview with this in front of this panel? If you ask me frankly, you know, something which I always look for is the enthusiasm in a person. Is he passionate and enthusiastic about the job that he's applied for? तो अब आप लोग Or does सीक्रेट he- जान लीजिए. or does he take it as just any other job? Two is the record of competence in terms of what he's achieved so far. Three, whether he's the cribber, wanting to say I could not do this because this was not there, that was not there, or is he a doer who's tried to address the challenges, the constraints, and still achieved something. So I think we are looking for rounded people to whom excellence matters, who are good leaders in taking people along, who are not just about themselves, but more about systems. So I think these are skill sets that you develop over time, and it's a pleasure to interview candidates to decide, and especially in the public enterprises, we feel happy now. It's been almost 3 years we've been doing this, to find very good leaders in India, in many of our central public sector enterprises, doing very well in their respective units, undertakings. And because, you know, excellence is the only thing that matters, and we try our level best to give the best leaders for public sector enterprises in the country. Right. Sir, you've been a pioneer in your journey. So I want to know that for somebody who wants to make a difference in the social sector, what quality that civil servant should have in them to make an impact like you have? I think, you know, it's a question of learning every day in your life. Learning from research, learning from people, learning from peer, learning from seniors, learning from civil society, media. You have to be open to all perspectives that come to you. But you also must be very clear about the goal and vision, where you want to be. And again, as I said, there are no halfway houses. If you wish to really do something well, as Swami Vivekananda used to say, live it, dream it, think of it, sleep with it,
for achieving anything, that is a kind of passion that is required. You have to accept it as yours, as your, and your shoulders must be strong. When you when you are associated with a program, Sarva Shiksha Abhiyan, National Rural Health, any of them, your shoulders need to be very strong. Yes, there are misadventures. We all know that even if the National Rural Health Mission in UP, there were some misadventures of corruption and so on. So your shoulders have to be strong to take both the bouquets and the brickbats. So I think a lot of lessons are here, but the only learning that I can say is it is better to have tried than not tried at all. Yes. And I think if everyone thinks like that, we will move much faster on a pathway that actually makes us an inclusive society. Sir, this has been incredibly insightful. And on a much lighter note, I want to get into something very exciting with you, which we do with all our guests. This is the rapid round. It's a fun segment, top 3. So you have to give us answers rapidly. There'll be 3 questions, and I will ask you 3 pointers for each you have to give me. So 3 questions and 3 pointers for each. With that, the first question is that 3 qualities you think are essential for effective rural development today. First is go by the evidence. Second, connect with communities for local action. Third, be flexible in your approach to be able to address the challenges as they appear at the ground level. Nice. And 3 unconventional innovations that have taken place in education that excite you when you think about them. The power of technology. Today, even with her average teacher, by the use of technology and the classroom, it is possible that an average teacher is able to explain concepts to children much better. So what we can do today with is a diligent teacher, not necessarily outstanding, but with the ability to handle technology to reach it to every child's requirement. Similarly, in the health sector, a lot of work that we do at the cutting edge, the power of the ASHA worker, the accredited social health activist, who have received WHO recognition, who have been pioneers in moving a lot of things at the cutting edge level. It was a new way of working where we provided skill sets to local village women, but instead of making them a government servant, the thrust was on performance-based payments to ensure that they remain of the community and contribute. Yeah. And the third issue that I can call is the community resource persons under the livelihood mission, where women who were poor have come out of their poverty and are now working as community resource persons in different parts of the country as Pashu Sakhi, Bank Sakhi, a whole lot of responsibilities, a Krishi Sakhi, a banking correspondent, a community mobilizer, and so on. The power of transformation lies with those who have actually lived lives of deprivation and who understand what it takes to get out of it. Right. And sir, 3 things in your life or career you'd like to rectify or maybe even do better when you look at your journey in retrospect today. I wish we had done things faster. I wish local governments and community organizations had an even larger role in determining what we worked on. And last but not the least, a greater amount of flexibility in the system of collaborative governance at the cutting edge level would have made things move even faster. Nice. Thank you, sir. And finally, my question to you is, what message or a piece of advice would you like to give to our youth of the country so that they can also make a difference in people's lives? Never lose hope and see every opening as an opportunity.
an opportunity to contribute meaningfully, an opportunity to grow, an opportunity for a better life and for better lives for others as well. Thank you so much, sir. Thank you. And it has been an absolute pleasure being with you on our show. Thank you so much. Thank you so much, guys, for watching, and see you next week on the next episode of Dear Unconventionals. Hope this episode was incredibly insightful for you as well.